श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और हम नोएडा आए थे। हमने सोचा था बेबी के लिए शॉपिंग वगैरह करेंगे। मैं 7 मंथ्स की प्रेगनेंट थी उस टाइम पे और जैसे ही हम इधर आए हम फिलिक्स हॉस्पिटल में आए। हमने सोचा एक बार डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। यहाँ हमें डॉक्टर सोनालिका मैम मिले और जैसे ही हमने एक स्टार्टिंग में एक अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में भी दिखाया था उस टाइम पे कि बेबी का वेट कम है। फिर मैम ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि बीपी वगैरह सब कुछ मॉनिटर करते रहो। और उसी दिन शाम को अचानक से मेरा बीपी बहुत हाई हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया, ऑलमोस्ट 230 को रीच कर गया। और उस टाइम पे मैं अकेली थी, यहाँ पे कोई था नहीं साथ। और मैम भी कंटिन्यूसली मेरा बीपी मॉनिटर कर रहे थे। तो फिर मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने बोला आप हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं सारा। फिर मैं आ गई, कोई था नहीं साथ, मैम थे यहाँ पे, बट उनकी भी ड्यूटी उस टाइम नहीं थी, लेकिन वो घर से आए थे। तो हाईली थैंकफुल टू मैम। और सच में कोई था नहीं साथ, तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एट दैट टाइम। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे ली और मेरे हस्बैंड को कॉल किया। कैसे इन्होंने किया है वो बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे ये सब मैनेज करना, लेकिन इन्होंने सब कुछ कर दिया, जो भी इनके तक था सब कुछ किया। उनके साथ बात की, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। देन आफ्टर मेरी सर्जरी हुई, मुझे फिर उस टाइम पे भी बेबी हुआ, प्रीमेच्योर बेबी था और 7 मंथ्स का 28 वीक्स का बेबी था। इसका वेट ऑलरेडी बहुत कम था। और यहाँ पे कैसे सब डॉक्टर्स ने मेरी हेल्प की है, इट वॉज कमेंडेबल। डॉक्टर विमल सर, डॉक्टर प्रभात सर, सब ने, इवन नर्सेज और हेयर, सब ने, एवरी स्टाफ मेंबर हैज हेल्प मी अ लॉट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरी वन ओवर हेयर। इन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। एंड आई होप ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे सिस्टर्स, ऐसा स्टाफ सब बच्चे को मिले ताकि वो ठीक हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू। I am Dr. Sonalika Singh Chauhan. I am gynae consultant in Felix Hospital, and I am very proud of my hospital today, and I am feeling very good about the team that I have been worked with on the case of Tabish, my patient, with my whole pediatrics team of Felix Hospital and my staff and my ICU team. Tabish was my patient. She was 7 months pregnant when she visited me, and she developed severe preeclampsia with uncontrolled BP on medication. She started having signs of impending eclampsia, and the day she visited me, the next day only she started having symptoms. Despite of all the medication, the BP was not controlled. So Tabish called me. I was in continuous touch with her. She sent me her BP, which was not controlled, and then I asked her to come to emergency. No attender was available at that time, which was really a tough call for me to manage. She came to emergency, and her husband was available only on phone. Before saying anything, I would really like to say first thing is that my patient was a real fighter. The way she handled this emergency, the way she cooperated with me was really well. She didn't get scared at all. I was continuous in touch with her husband, and it was a tough call for me as no attender was available. So but just to save my patient and the baby, I had to take that decision, and I took a consent from her husband over the phone, and we planned an emergency C-section in view of severe preeclampsia and the de-arranged Doppler. Baby was premature. I informed my pediatrics team, Dr. Vimal, Dr. Prabha, Dr. Neeraj. They all were there to help me. And after the C-section, we had to admit the baby to an ICU on ventilator support. So I just want to say that Felix, the whole hospital team has helped us a lot in this case, and Tabish herself is a very good patient. She has always been a fighter, and so her daughter. So I just want to thank everyone, especially the pediatrics team of the Felix Hospital. Thank you. So I congratulate Tabish for having healthy baby. And the day she was getting operated, it was panic situation for her, and her husband was not here, so it was a difficult time for her. But we consoled her, and she agreed for everything. We recommended according to the need. And when baby was born, cesarean born baby, she was having barely heart of 50, 40, 50.
and by NMBU, according to NRP protocol, we resuscitated the baby, intubated in the labor room itself, and after that we transported to NICU. And the night time was very difficult for us for managing the baby, because for financial and everything, there was no any support for Tavis, but her husband was bold. I called on phone, and he agreed for everything. We given surfactant on ventilatory support, and it was continued for the next 12 hours on invasive ventilation. And then we actually put on non-invasive ventilation, and after that the baby has almost normal course, and we are monitoring the baby neurologically, weight, length and everything, and it's going normal almost, with normal linear growth, and other neurological parameters seems to be fine as of now. हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रभात है। आई एम द नियोटोलॉजिस्ट इन फिलिक्स हॉस्पिटल। तबिश को कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत ही हिम्मत और बहुत ही पेशेंस के साथ बेबी हमारे पास NICU में रहा नियर अबाउट 40 डेज़। इन 40 डेज़ में हमारे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। प्रीमेच्योरिटी, वेंटिलेशन, बच्चे के आगे की मॉनिटरिंग, ब्रेन डेवलपमेंट, जिस तरीके से बच्चा ग्रो करता है। हमेशा पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि बच्चा हमारा आगे जाके कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा, स्पेशली प्रीमेच्योर बेबीज़ के साथ। तो हमारे पास सारी टीम थी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट, हम लोग 3 नियोटोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, पूरी नियोटोलॉजी की टीम है। वेंटिलेशन से लेके CPAP, HFNC, जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं। हम इन सारी चीज़ों का हमने सीक्वेंशली इस्तेमाल किया, और तबिश और उनके हस्बैंड काफ़ी कोऑपरेटिव है, चीज़ों को समझने में हमेशा क्वेरीज रहती थी, बट क्वेरीज आर मोस्ट वेलकम। आज हम इसको बेबी को डिस्चार्ज करते हुए बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड द ICU टीम, जिन्होंने मदर को उस कंडीशन में लाया जिसमें बेबी हमारे पास सेफली हम निकाल पाए।